What would you do if you were in government at this point in time? Wouldn't you consider what seems to be the most sensible option? Call for a countrywide election so whosoever wins can come in with a fresh, 5-year mandate to deal with the myriad crises Pakistan represents today? अगर आप इस वक्त हुकूमत में होते तो आप क्या करते? क्या आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा समझदार ऑप्शन क्या है? मुद्दीर इंतखाबात का मुतालबा करना ताकि जो भी जीते वो इन बेशुमार बहरानों से निमटने के लिए 5 साला मैंडेट के साथ सामने आ सके जो पाकिस्तान को आज दरपेश हैं। I'd do that for sure. I have a feeling you might too, as all of us have had it up to our noses with the poisonous, acrimonious political atmosphere against the backdrop of extreme financial hardship not just for those trapped at the bottom of the pyramid but the middle class as well. Sadly, you and I are not the government or some state institution, are we? So, here is what is likely to happen. At least for now, the establishment is giving the impression that its leadership has had enough of what they see as a protégé gone rogue and are struggling to deal with that fact. This does not mean they are prepared to reconcile with him or his brand of populist politics. For his part, he is not prepared to abandon his denomination of politics simply because it has delivered him a large support base. That dividend may only be fully ascertained in an election, but he knows it is potentially far bigger than at any time in the past. What does our analysis and a very brief look at our history tell us about what lies ahead? His other major source of strength is seemingly supporters and believers in his cause in the judiciary. While this political role of the judges, as one senior judge has called it, may have split the arbiters of justice down the middle, many say it is sure to cement his support among an influential section in the institution. These factors will spur him on. The major parties in the coalition government, namely PMLN and PPP, were at the receiving end of some appalling treatment at the hands of the last government headed by the PTI. Some of those strong-arm methods were likened to modern-day fascism. So, despite presiding over a train wreck of an economy, they are not eager to see the PTI back in power, as they are fearful of a repeat of what happened to them, when some of their leaders were imprisoned for months on end without trial and others convicted in dubious managed verdicts. As the PDM completes its first year in office, it too has left no stone unturned to hound the PTI. The latter may be grateful that it has apparent support in some sections of the judiciary as relief is not long in coming and it is spared the experience of its opponents when it was itself in power. Nonetheless, some fundamental issues remain to be addressed. If PDM leaders still stake a claim to being democratic, as one member of the coalition said, speaking on condition of anonymity, elections should be held even if they have to watch the results from Dubai/elsewhere abroad to see who wins. This seasoned parliamentarian told me that democracy means upholding the will of the people, regardless of whether they elect a leader bereft of a democratic ethos, and cited the example of Donald Trump in the United States and Jair Bolsonaro in Brazil. Both came to power and exited through elections. If the PTI wins the election and starts acting as it did the last time, we will be well within our rights to take our protest both inside and outside Parliament. He added, the state of the economy will mean multitudes will join us. Having looked at the various players, their stance and also at fundamental principles, it is equally relevant to acknowledge that the Constitution and the rule of law has been followed selectively based on the likes/dislikes of those interpreting it. Some argue that of late, constitutional provisions have also been rewritten to pave the way for certain desired political outcomes. The sacred document has also often been subjected to assault by those with brutal power. In such cases, the support of the interpreters of the Constitution has been vital in undermining it, and without such apparent collusion, any mutilation wouldn't have been possible. What does our analysis and a very brief look at our history tell us about what lies ahead? Well, the first indication will come early next week when the Apex Court will learn from the Election Commission of Pakistan whether it has received the funds from the government for holding the elections to the Punjab Assembly next month. It will be just as significant to keep an eye on divisions in the Supreme Court as any more public manifestations of discord may limit how much pressure the court can bring to bear on the government, possibly in the shape of contempt notices etc.,
in case it fails to deliver funds to the ECP by the deadline. Analysts have already looked at the communiqué issued after a meeting of the National Security Committee of the Cabinet and said it is clear the top priority has been accorded to the launch of operations against TTP terrorists rather than provision of security to the elections, especially by the military and paramilitary troops. On the issue of TTP, the last government and its backers in the military and intelligence services have been slammed, and the recent upsurge in terror attacks has been attributed to the policy of freeing terrorists from prisons and the resettlement of several thousand TTP foot soldiers in erstwhile Fata. This deadlock between key arbiters of the country's destiny augurs well neither for the country's stability nor its economy. Against this backdrop, it remains a forlorn hope that some sanity prevails and every player agrees to a dialogue and the interlocutors can plot a course to safety. One shudders to think what'll happen otherwise. The writer is a former editor of Dawn. Published in Dawn, April 9, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अगर आप इस वक्त हुकूमत में होते तो आप क्या करते? क्या आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा समझदार ऑप्शन क्या है? मुद्दीर इंतखाबात का मुतालबा करना ताकि जो भी जीते वो इन बेशुमार बहरानों से निमटने के लिए 5 साला मैंडेट के साथ सामने आ सके जो पाकिस्तान को आज दरपेश हैं। मैं यकीनी तौर पर ऐसा करूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब में न सिर्फ अहराम के निचले हिस्से में फंसे हुए लोगों बल्कि मुतवस्सित तबके के लिए भी इंतहाई माली मुश्किलात के पस मंजर में जहरीले और तल्ख सियासी माहौल के साथ अपनी नाक तक बर्दाश्त किया है। अफसोस की बात यह है कि आप और मैं हुकूमत कोई रियासती इदारा नहीं है, क्या हम हैं? लिहाजा यहाँ क्या होने का इम्कान है? कम अज कम फ़िलहाल स्टेब्लिशमेंट ये तासुर दे रही है कि इसकी क़यादत के पास काफ़ी कुछ है जिसे वो बदमाश के तौर पर देखते हैं और इस हकीकत से निमटने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ उनके पॉपुलिस्ट सियासत के ब्रांड के साथ मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से वो अपनी सियासत के फ़िरक़े को सिर्फ इस वजह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसने उन्हें एक बड़ी हिमायत फराहम की है। ये मुनाफा सिर्फ इंतखाबात में ही मुकम्मल तौर पर मालूम किया जा सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये मुमकिना तौर पर माजी में किसी भी वक्त के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा है। हमारा तज्ज़िया और हमारी तारीख पर एक मुख्तसर नज़र हमें क्या बताती है कि आगे क्या होने वाला है। उनकी ताकत का दूसरा बड़ा ज़रिया बज़ाहिर अदलिया में उनके मकसद के हामी और यकीन रखने वाले हैं। अगरचे जजों के इस सियासी किरदारों को, जैसा कि एक सीनियर जज ने कहा है, इंसाफ के सालसों को दरमियान में तकसीम कर सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि इससे इदारे के एक बासर तबके में उनकी हिमायत को यकीनी तौर पर तक़वियत मिलेगी। ये अवामिल इसकी हौसला अफजाई करेंगे। मखलूत हुकूमत में शामिल बड़ी जमातें मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी को PTI की क़यादत वाली पिछली हुकूमत के हाथों कुछ खौफनाक सलूक का सामना करना पड़ा था। इनमें से कुछ मजबूत हथियारों के तरीकों को जदीद दौर के फाशिज्म से तशबीह दी गई थी। लिहाजा मईशत को तबाह करने वाले ट्रेन हादसे की सदारत करने के बावजूद वो PTI को दोबारा इक़्तिदार में देखने के ख्वाह नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात से खौफजदा हैं कि उनके साथ किया हुआ जब उनके कुछ रहनुमाओं को बगैर किसी मुकदमे के महीनों तक जेल में रखा गया और दीगर को मशकूक मुनज़्ज़म फैसलों में सज़ा सुनाई गई। जैसा कि PDM अपनी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल कर रही है, इसने भी PTI को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्तर ज़िक्र शुक्रगुजार हो सकता है कि उसे अदलिया के कुछ हिस्सों में वाज़ेह हिमायत हासिल है, क्योंकि राहत मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं है और जब वो खुद इक़्तिदार में थी तो अपने मुखालिफिन के तजुर्बे से बच गई है। ताहम कुछ बुनियादी मसाइल को हल करना बाकी है। अगर PDM के रहनुमा अब भी जमहूरी होने का दावा करते हैं, जैसा कि इत्तेहाद के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, अगर उन्हें दुबई या बैरून मुल्क से नताइज देखने पड़े तो भी इंतखाबात होने चाहिए कि कौन जीतता है। इस तजुर्बा का रुकन पार्लियामेंट ने मुझे बताया कि जमहूरियत का मतलब अवाम की ख्वाहिशात को बरकरार रखना है, कत नज़र इसके कि वो जमहूरी अक़दार से महरूम रहनुमा का इंतखाब करते हैं,
और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और ब्राज़ील में जेर बोल्सोनारो की मिसाल दी। दोनों इक़्तिदार में आए और इंतखाबात के जरिए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है और पिछली बार की तरह काम करना शुरू कर देती है तो हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का हक रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा, मईशत की हालत का मतलब ये होगा कि बहुत से लोग हमारे साथ शामिल होंगे। मुख्तलिफ खिलाड़ियों, उनके मौक़िफ़ और बुनियादी उसूलों को देखने के बाद ये तस्लीम करना भी इतना ही मुनासिब है कि आइन और कानून की हुक्मरानी की तशरीह करने वालों की पसंद/नापसंद की बुनियाद पर मुंतखब तौर पर अमल किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हाल ही में आईनी दफ़ात को भी दोबारा लिखा गया है ताकि कुछ मतलूबा सियासी नताइज की राह हमवार की जा सके। इस मुक़द्दस दस्तावेज़ को अक्सर वहशियाना ताकत रखने वालों की तरफ से भी हमले का निशाना बनाया गया है। ऐसे मामलात में आइन के तर्जुमानों की हिमायत इसको कमज़ोर करने में अहम रही है और इस तरह की वाज़े मिली भगत के बगैर कोई भी मस्ख़ करना मुमकिन नहीं था। हमारा तज्ज़िया और हमारी तारीख़ पर एक मुख्तसर नज़र हमें क्या बताती है कि आगे क्या होने वाला है। पहला इशारा अगले हफ्ते के अवाइल में मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सीखेगी कि आया उसे अगले माह पंजाब असेंबली के इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत से फंड्स मिले हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पर नज़र रखना इतना ही अहम होगा क्योंकि इख्तिलाफात के मज़ीद अवामी इजहार से हुकूमत पर कितना दबाव पड़ सकता है, मुमकिना तौर पर तौहीन अदालत के नोटिस वगैरह की शक्ल में, अगर वो डेड लाइन तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने में नाकाम रहती है। तज्ज़ियाकार पहले ही काबीना की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये का जायज़ा ले चुके हैं और कहा है कि ये वाज़ेह है कि इंतखाबात को सिक्योरिटी फराहम करने के बजाय टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने को अव्वलीन तरजीह दी गई है, ख़ास तौर पर फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्तों की तरफ से। टीटीपी के मामले पर पिछली हुकूमत और फ़ौज और इंटेलिजेंस सर्विसेज में इसके हामियों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया है और दहशतगर्द हमलों में हालिया इजाफे को दहशतगर्दों को जेलों से रहा करने की पॉलिसी और साबिक़ा फाटा में टीटीपी के कई हज़ार पैदल फ़ौजियों की बाज़ाबादकारी से मंसूब किया गया है। मुल्क की तकदीर के अहम सालिसों के दरमियान ये डेडलॉक न तो मुल्क के इस्तेहकाम और न ही इसकी मईशत के लिए अच्छा इशारा है। इस पस मंज़र में ये उम्मीद बाकी है कि कुछ नरमी बरकरार रहेगी और हर खिलाड़ी बातचीत पर राज़ी हो जाएगा और मुज़ाकरातकार महफूज रास्ते की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। ये सोचकर कांप उठता है कि वरना क्या होगा। मज़मून निगारदान के साबिक़ एडिटर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 9 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.